నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కృష్ణా ప్రాజెక్టుల్లో తెలంగాణ విద్యుదుత్పత్తి చేస్తోందని వైకాపా ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి లోక్సభ వేదికగా కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఇలాగే కొనసాగితే రాయలసీమ సహా ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు నీళ్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉండదన్నారు. విద్యుదుత్పత్తి నిలిపేయాలంటూ కేఆర్ఎంబీ ఇచ్చిన ఆదేశాలు కఠినంగా అమలయ్యేలా కేంద్రం, కేఆర్ఎంబీ ప్రయత్నించాలని కోరారు. కృష్ణానదిపై తెలంగాణ అనుమతులు లేకుండా నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టులను నిలిపేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కృష్ణా, గోదావరి జలాల పరిధిని నిర్దేశిస్తూ కేంద్రం విడుదల చేసిన గెజిట్పై ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి అభ్యంతరాలు లేవనెత్తగా కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి గజేంద్ర షెకావత్ సమాధానమిచ్చారు. విద్యుదుత్పత్తి ఆపాలని తెలంగాణకు చెప్పినా వినట్లేదన్నారు. మరోసారి చెబుతామని సభలో తెలిపారు. ఇరు రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలు కాపాడేందుకే గెజిట్ విడుదల చేశామన్నారు. After Honorable CM of AP wrote to Government of India, KRMB instructed Telangana Genco to stop power generation. In spite of board's order, even today power generation is continued without building water level in Srisalam Dam, thereby adversely affecting the Rayalaseema districts, the Nellore Prakasham district and also Chennai drinking water purpose. Considering the above facts, will the Government of India and KRMB strictly enforce the order passed by the KRMB to stop untimely power generation by Telangana Genco, and will it protect the farmers' interest and drinking water interest of the people of Andhra Pradesh and also of Chennai city, sir? धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के किसानों, रायलसीमा के किसानों को लेकर के, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। केआरएमबी जो रेगुलेटरी बॉडी है एज पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उस रेगुलेटरी बॉडी के 9th मीटिंग में ये तय किया गया था कि पावर जनरेशन विल बी इंसिडेंटल टू इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट। जब इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी की आवश्यकता होगी, केवल और केवल तभी पानी जो है बांध से छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केआरएमबी के चेयरमैन को भी पत्र लिखा था। हमने उसके कंटेक्ट में वापस प्रश्न का जवाब भी लिखा है। हमने बार बार उनको जो है केआरएमबी के माध्यम से भी और डायरेक्ट जेनको को लिख करके ये कहा गया है कि आप पावर जनरेशन को तुरंत बंद करें, लेकिन बंद करने के बजाय जेनको ने ये लिख दिया है कि अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, फुल स्विंग पे तीनों प्लांट ऑपरेट करने चाहिए। हमने एक बार फिर तेलंगाना सरकार को चिट्ठी लिख करके कहा है कि इसे बंद किया जाना चाहिए। Sir, my question number 2, sir. In addition to this illegal and untimely withdrawal of water, Telangana government is constructing Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme without any permission from CWC or KRMB and without getting environmental clearance. In disguise of drinking water project, they are constructing massive lift irrigation project which will pump 90 TMC of water every year at the level of 800 feet from Srisalam Dam, sir, through power generation from left bank and through Palamuru Rangareddy lift, Kalvakurti lift, Dindi and SLBC tunnel scheme. The Telangana government will be able to draw or consume 8 TMCs of water per day at the level of 800 feet in Srisalam Dam, sir. Sir, if Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme is completed, then the Ayakat of SRBC, Teluganga, KC Canal, GNSS, HNSS, Veligonda and also the drinking water needs of the Andhra Pradesh and Chennai will be at very high risk, as the minimum level to give water to the AP project is 854 feet, except for GNSS which is at 834 feet. Keeping in view of the severe loss that is going to incur for the people of Andhra Pradesh and also for Chennai city, will the Government of India take stern measures to stop Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरस्टेट बेसिस पर बने जो राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए देश के संविधान और इंटरस्टेट बेसिन एक्ट में जिस तरह का प्रावधान किया, उस प्रावधान के अनुरूप आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी दोनों राज्यों के कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों पर बने हुए प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए केआरएमबी और जीआरएमबी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन 7 साल तक क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था, दोनों ही बोर्ड अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करने के लिए प्रयास करते हैं, राज्य सरकारों को लगातार उसके लिए बातचीत करते हैं। हमें इस व्यवस्था को और अधिक सुचारू करने के लिए हमने हाल ही में दोनों बोर्ड्स के ज्यूरिसडिक्शन को नोटिफाई कर दिया है
उस नोटिफिकेशन के बाद में जो है बोर्ड की शक्तियां और बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस तरह की परिस्थितियों को रोक पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही प्रदेशों में बिना CWC और भारत सरकार की अनुमति लिए हुए इस तरह के प्रोजेक्ट करने की परंपरा रही है और लगातार वो परंपरा चल रही है, जो निश्चित रूप से दोनों राज्यों के बीच में तनाव का कारण बनती है।